Farmer Flashpoint 2.0. Stalemate on MSP demand. Is legalizing MSP feasible? Why did Centre Farmers talks fail? Big focus on Newstrack. There is no end to the farm stir deadlock. Adamant on their MSP for all crops demand, the protesting farmers mobilized proclaim machines, JCBs, excavators near the Punjab-Haryana border as they resumed their Delhi Chalo march. The police resorted to intermittent tear gas shelling to stop the protesters from advancing to the national capital. As the stalemate continues, the centre has invited the protesting farmers for a fifth round of dialogue. After 2 days of pause, on Wednesday, the Delhi Chalo march resumed. Tractors and trolleys loaded with sandbags rolled towards the national capital. Preparations are under its way to save themselves from tear gas. They are keeping these jute bags wet. Whenever a tear gas shell will be actually fired, these bags will be used by the farmers to move forward. Also, these sandbags you can see that were filled by the farmers yesterday have now been kept on the ground. Clearly, the arrangements have been made by the farmers, but this time the Haryana police is also not keeping any stone unturned to stop them from moving ahead. Heavy-duty machineries like pocklane and earth movers queued at Delhi's entry point near Shambhu border. Farmers were seen ready with armoured gear and gas masks and even steel shields to combat any tear gas firing. National capital entry points were fortified as protesting farmers started moving forward. JCB machines have been put. They say that as far as the machinery has been put here, the pocklanes, and these are the ones which is going to move forward. That means tension ahead of this entire movement. And clearly, these glasses have been put, this mask has been put. So the farmers very much ready. We've heard about Jai Jawan, Jai Kisan, and it seems that the Jawan is versus the Kisan. It's going to be a big showdown here. हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद है वहाँ पर बड़ी संख्या में। अनिल जायसवाल आगे की तरफ और ये देखिए कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है और जिस तरह से किसानों ने पोकलाइन मशीन मंगाई है, सामने की तरफ देखिए हरियाणा पुलिस ने भी वो पोकलाइन मशीन मंगवाई हुई है वहाँ पर। तो सीधे सीधे जिस तरह की तैयारी किसानों की है उसी तरह की हरियाणा पुलिस की है। Tear gas shells were sporadically fired to impede their advance. Look over there, the drones that are being used to actually drop the tear gas shells. This, despite the central government suggesting or requesting for a fifth round of talk, we clearly see the farmers leaders have been meeting to understand whether they will agree for a fifth round of talk. They are clearly getting a little agitated, and that's why trying to challenge the forces on the ground. Clearly, this is why you see these tear gas shellings that is right now happening at the Shambhu border. In a bid to ease tensions, the government extended an offer of a fifth round of talks, emphasizing the need for peaceful resolution. हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावनाएं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। Previous discussions between the government and the protesters ended in an impasse, with farmers standing firm on their demand
for minimum support price assurance on all crops. The latest round of farmer protests witnessed thousands gathered at the borders, and their bid to enter into Delhi remained unsuccessful. With Arvind Ojha, Shreya Chatterjee and Kamaljeet Sandhu at Shambhu border. Bureau Report, India Today. The dialogue between the farmers and the government so far has made no headway. Here's what I hope to do on the Newstrack. We've got some representatives of the farmer unions. We've got people who understand the thinking within the government. We'll try and do a live dialogue on the Newstrack to try and understand why the government thinks the package which was offered for cooperatives to buy crops for a 5-year contract is really the best the government can do, and try and understand also from the farmer union's perspective why this is not acceptable. So allow me to introduce you to our guests joining us for this broadcast. Professor Ramesh Chand, member of the Niti Aayog, a top expert on Indian agriculture. We have with us on this broadcast Shivraj Singh, National President of the Bharatiya Kisan Union Lok Shakti. They were protesting outside Chief Minister Yogi Adityanath's offices in Lucknow today. We've got also with us on this broadcast Chaudhary Pushpender Singh, President of the Kisan Shakti Sangh. We have Raghav Avasthi, who's an advocate who leans towards the BJP government. We have Prakash Chandra Sharma, former Vice President of the Kisan Morcha. I want to go across to Shivraj Singh first, President of the Bharatiya Kisan Union. And first, just give our viewers a sense of what's happened. In the dialogue that's been concluded so far, the government has suggested that there be crop diversification in states like Punjab, a 5-year contract for 5 additional crops. Tur, which is arhar, urad dal, masoor, maize and cotton at a minimum support price. A contract for 5 years, locked in through a body like NAFED, that's National Agricultural Cooperative Marketing Federation, or the NCCF, National Cooperative Consumers Federation. These are solid cooperatives, a 5-year contract. And I want to get our first guest, Shivraj Singh, to explain कि सर सरकार का जो अब तक का प्रस्ताव है उसको किसान क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इस प्रस्ताव को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 5 साल का किसानों को लॉक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एक बहुत जानी मानी संस्था जैसे नाफेद के साथ, और उससे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लॉक हो जाएगी। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम बहुत ही हद से आगे जाकर किसानों को ऑफर कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो एक्सेप्ट कर लें, फिर भी किसान इसको क्यों ठुकरा रहे हैं? जी धन्यवाद आपका। और सरकार जो भी 2 कदम आगे बढ़ा रही है उसका हम स्वागत करते हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन 5 फसलों के लिए सरकार कह रही है, मक्का है, उड़द है, मसूर है, कपास है, इनको सबको जो जंगली जानवर हैं, घड़रोज है, नीलगाय है, ये इतना नुकसान करते हैं दलहन में और कपास में कि उसकी खेती किसान कर नहीं पा रहा है। अगर किसान दलहन की खेती कर रहा है तो नीलगाय और रोज से चढ़ जाते हैं। आज जंगली जानवरों की इतनी समस्या है, कहीं हाथियों का, कहीं बंदरों का, कहीं जंगली सुअर का, कहीं गाय का, कहीं घड़रोज नीलगाय का। उसके लिए हमने एक मांग की थी, जैसे बीएसएफ होती है उसकी तर्ज पे एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो खेती है जिसको जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उसमें बचत भी होगी और दलहन को बढ़ोतरी भी मिलेगी, विदेश से हमें आयात भी नहीं करनी पड़ेगी। किसान को जब किसान गेहूं और धान पे क्यों आया? क्योंकि जब जंगली जानवरों से हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नहीं, बट आप ये मानेंगे ना कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि पंजाब जैसे राज्य में पानी का स्तर लगातार घट रहा है, जो सॉइल है उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा लगातार बढ़ रही है, सॉइल टॉक्सिक हो रही है, ऐसे में अगर हम क्रॉप पैटर्न को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, तो उससे तो न केवल किसानों को फायदा है, देश को फायदा है, हमारे एनवायरनमेंट को भी फायदा है। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि किसान जो है फसल चक्र के हिसाब से फसल उगाए। अगर हम धान और गेहूं ही करते रहेंगे तो फसल चक्र नहीं बनेगा। लेकिन मजबूरी मैंने बताया ना जंगली जानवरों की। पहले हम जो दलहन की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, उसको जंगली जानवरों से कैसे रखाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले कृषि सुरक्षा दल का गठन करना पड़ेगा। Okay, just hold that thought for a moment. I want to go across to Professor Ramesh Chand. As I said, we'll try and do a live dialogue with India Today trying to play
to the extent possible, the role of a bipartisan, neutral observer and a facilitator of this conversation. So Ramesh Chandji, the first question from the farmer unions that, okay, tur, urad, masoor, maize, cotton, this is good, but animals attack these crops, and therefore while they appreciate the offer of a minimum support price, they're saying till the time there is some kind of a krishi security force which is warding off these animals, it won't work because the jungli janwar will simply eat their crop away. How do you respond to that? Ramesh Chandji. Rahul ji, problem of wild animal and stray cattle is very serious in many parts of the country. I don't deny that. But this offer of assured MSP 5-year contract was for the state of Punjab. It was not for entire country. So when you come to Punjab, beet crop is as susceptible to animal as is any other crop. So I think in major part of Punjab, except small Kandi belt, this problem of livestock damaging crop is not there. So they are already in Rabi season, sometime growing some maize. They are already growing summer moong, and they were also growing cotton. There are some problem because of which they are not. They have a reduced area under this. So while I fully agree with the respected farmer leader that in Uttar Pradesh and many parts of the country, this stray cattle and wild animal are a problem, and we need a solution for that. But in the context of Punjab, that is not a factor. Okay. I want to go across now to Chaudhary Pushpender Singh, President of the Kisan Shakti Sangh. I think Ramesh Chand has a good counter. If it is animals that you are truly worried about, they attack wheat just as much. गेहूं की खेती में भी जानवरों के हमले होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल जो बाकी किसानों को ऑफर किया गया है सरकार ने नए पैकेज में उड़द, तूर, मसूर, मेज, कॉटन, उन्हीं पे नहीं हमले होते, हमले तो वीट पे भी होते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि किसान कुछ ना कुछ बहाना खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ वजह खोज रहे हैं कि कैसे इस डायलॉग को स्कटल किया जाए, इस डायलॉग से कुछ निकला जाए, बजाय इसके कि कुछ पॉजिटिव आगे बढ़े हम लोग इस पे. देखिए राहुल जी, पिछला जो आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हुआ था, उसमें मांग ये थी कि जो 23 फसलें जिनकी एमएसपी गन्ना समेत घोषित होती है, उसकी जो है मिनिमम सपोर्ट की जो प्राइस है, वो पहले तो C2 प्लस 50%, जो C2 प्लस 50% की लागत है, जो संपूर्ण लागत कहते हैं C2 लागत, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार पहले तो वो घोषणा हो कि इसकी प्राइस ये होगी. और दूसरा पार्ट इसका ये है कि वो प्राइस एंश्योर्ड होकर के लीगल गारंटी के रूप में मिलेगी. इसमें मांग ये नहीं है कि सारा प्राइवेट सेक्टर को खरीदना है. प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी से नीचे के प्राइस पर नहीं खरीदेगा. अब बात आई कि ये 23 फसलों में से ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, आप मुझे बताइए, आपके घर के सामने 23 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन चलती 3 ही गाड़ियां हैं, तो आप बाकी गाड़ियों में कैसे बैठ जाएंगे? यानी हमारे देश में केवल जो है गेहूं, धान और गन्ना, इसी की खरीद होती है. यानी कि 23 फसलों में से 3 गाड़ियां ही चलती हैं, बाकी केवल घोषित हैं कि ये गाड़ियां आपको ले जाएंगी आगे. हम ये कह रहे हैं कि 23 की 23 गाड़ियां चला दो, 23 की 23 का प्राइस एश्योर्ड कर दो. प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी नहीं, but there is a problem with your argument. No, one second, Chaudhary Pushpender Singh, there's an economic problem with your argument. Let's assume कि सरकार ने तय कर लिया आर्टिफिशियली एक इन्फ्लेटेड प्राइस दे दिया कि अब से आपने कोई भी आपने कमोडिटी उठा ली, मेज ले लीजिए, कि उसकी अब से X अमाउंट, लेट्स अज्यूम 100 यूनिट्स वैल्यू होगी, लेकिन मार्केट उसको कहता है कि इसकी 70 यूनिट वैल्यू है, 70 से ऊपर मार्केट देने को तैयार नहीं है, तो आपके किसान की जो उपज है उसको तो कोई खरीदेगा ही ना, वो तो पड़ी रहेगी, वेस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी. क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को मार्केट वैल्यू से ऊपर बेचने की जबरदस्ती कोशिश करते हो, आप कह रहे हो कि सरकार नहीं खरीदेगी, प्राइवेट वाले खरीदेंगे, लेकिन एक फ्लोर लग गया कि इस फ्लोर से कम नहीं, तो मार्केट का जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो छुएगा ही नहीं किसान की फसल को, तो वेस्ट हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगी. नहीं, इस बारे में सारा विस्तार से आज भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे ये लेख लिखा है, मिनिमम सपोर्ट. नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना. आप किसी भी सर, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स तो चेंज नहीं होते ना दुनिया भर में. अगर आप किसी भी चीज का प्राइस आर्टिफिशियली रेज करने की कोशिश करते हैं, एक अननेचुरल लेवल पे लेके जाते हैं, उसके नीचे तो ट्रेडर खरीदेगा ही नहीं, वो वेस्ट हो जाएगी क्रॉप. अभी कुछ तो उसको वैल्यू मिलती है, जो भी मार्केट की उस टाइम की वैल्यू है, वरना तो वो ऐसी पड़े रहेगी. नहीं, मैं बता रहा हूँ, जवाब तो सुनो, तभी तो आएगी बात क्लियर.
देखिए, एमएसपी की मिनिमम गारंटी जब आप देते हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये मिनिमम वो प्राइस है जिसको किसान को यदि नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में वो अनवायबल हो जाएगा, लॉस में जाएगा और कर्जे में डूबेगा और अंत में खेती छोड़ देगा। ये कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला प्राइस नहीं है कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा प्राइस दे दिया तो कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं 4 उदाहरण दे देता हूं आपको। एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो है 50 रुपए का पेट्रोल और डीजल हमारे देश में 100 रुपए के आसपास बिकता है। क्या आप लोगों ने खरीदना बंद कर दिया? बिजली के रेट सरकार घोषित करती है, जो भी रेट है उसको सब लोग खरीदते हैं, सबके घर में बिजली जल रही है। गैस का सिलेंडर वो प्रेस्क्राइब करते हैं और अपने खुद की सुरक्षा के लिए सेक्टर रेट जमीनों का सरकार कहती है इतने से नीचे, अगर राहुल कंवल का कोई फ्लैट है तो इतने से नीचे पुष्पेंद्र सिंह नहीं खरीद सकता, चाहे हम दोनों नीचे मिलकर के खरीदना चाहें। Hold that thought, because okay, this is 1 second. Let me get Professor Ramesh Chand to respond. You've given circle rate examples when houses are bought in cities, or petrol or diesel per kilo prices, or prices also for electricity. They're saying when you buy say 1 liter of petrol or diesel, or when you buy 1 unit of electricity or a circle rate or an LPG cylinder, the price is set. And you just need to make your peace with it, and that's the price at which you can buy. Why can't the same be done for these 23 crops? Ramesh Chand. राहुल जी, ये सब इशू बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनसे जुड़े हुए नुआंसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करना चाहूंगा फेलो पैनलिस्ट के साथ। सबसे पहले, यदि अश्योर्ड एमएसपी ही सभी चीजों का सलूशन होता, पैनासिया होता, तो पंजाब के किसान एजिटेशन ना करते। वहां पर बीट और पैडी के अंडर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का 93% आता है, यानी कि लगभग सभी, एक फॉडर है, बाकी मेन क्रॉप और कॉटन है, वो राइस और वीट ही है। कभी एक दाना भी एमएसपी से नीचे वहां कई डिकेड्स में नहीं बिका। मैं सिचुएशन मॉनिटर करता हूं। तो यदि एक एमएसपी ही सलूशन होती सभी प्रॉब्लम का। नहीं, पर आप सिंपल जवाब दीजिए ना भाई। किसान नेता ने पूछा कि सर्कल रेट लगता है घरों का, एलपीजी सिलेंडर का रेट होता है, पेट्रोल डीजल का रेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है, इसका भी रेट सेट कर दीजिए। सरकार ने बोला कि भाई 100 रुपए से कम पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको मिलता ही नहीं है। सेम हम क्यों नहीं कर सकते इन 23 कमोडिटीज में? इसका जवाब दीजिए रमेश चंद। हाँ, इसके 2 जवाब हैं। पहला तो ये है कि एमएसपी एक सिचुएशन है जो हमारी 23 क्रॉप्स है, ये होनी चाहिए। मैं एमएसपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन एमएसपी के 2 कंपोनेंट हैं। एक ये है कि एमएसपी मिले, दूसरा उसका कंपोनेंट है कि ये हमें एमएसपी मिले। यू सी, पहले पार्ट पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरे पार्ट पे कि हमें एमएसपी भी मिले और एमएसपी भी ये मिले, तो वहां पर एक कंटेंशन है कि एमएसपी एक रीजनेबल मिनिमम सपोर्ट। नहीं, पर सर रीजनेबल का इशू ये है ना, दिस गवर्नमेंट गेव डॉक्टर स्वामीनाथन a Bharat Ratna for the work that he did to agriculture. Now the core of the Swaminathan committee report is the pricing of food produce, where he's come up with a formula which looks at the price of different inputs, it looks at the price of different kinds of labor, has a weighted cost of production, and adds a 50% margin for the farmer. Now the argument the farmers are making is, if you've given this man the Bharat Ratna, surely you think he knows what he's saying and doing. Why can't you follow his formula? That's what they're asking for. उसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं भारत रत्न क्यों दिया गया उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको भारत रत्न उनके ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया, ना कि उनके इकोनॉमिक्स के नॉलेज के लिए दिया गया। प्राइसेज इशू एक इकोनॉमिक इशू है, ये प्लांट ब्रीडिंग का इशू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। अब मैं आता हूं कि स्वामीनाथन साहब पे, मैंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी है। जब सरकार A2+FL और जो भी है, ये अपने मैनिफेस्टो में जो इन्होंने किया वर्ष 17-18 में, ये हो रहा था चर्चा कि ये सरकार इसको, स्वामीनाथन साहब को रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करेगी। मैंने माननीय स्वामीनाथन साहब को आपके चैनल से कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, एक मीटिंग में वो मान गए और वो आए नीति योग में। वहां 10 लोग और थे, शिराज हुसैन जी थे, अशोक दलवई थे, ऐसे करके 10 लोग और थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि मान्यवर, आप हमें ये बता दीजिए कि 50% की फिगर पे अब किस आधार पे आए, वो क्या साइंटिफिक बेसिस है। सारी एमएसपी की कॉस्ट कैलकुलेशन का एक साइंटिफिक बेसिस है।
आप हमें कृपया ये बताइए कि 50% आपने क्यों कहा, 5% क्यों नहीं कह दिया, 80% क्यों नहीं कह दिया? देखो, लॉजिकली एक बात करने के लिए मार्जिन होना चाहिए। क्या वो मार्जिन 50% होना चाहिए? उसका लॉजिक। दूसरा जो हमने उनसे जानना चाहा, नहीं तो क्योंकि उन्होंने क्या कहा आपसे जब सवाल पूछा तो? मैं आ रहा हूं, इसके साथ ही दूसरा, उन्होंने काफी देर तक इस पे जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनको दूसरा सवाल किया कि आप C2 कॉस्ट पर 50% अमाउंट जोड़ने की कहा है आपकी रिपोर्ट में। दो तरह के कॉस्ट हैं, एक जो किसान पे करता है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उस पे उसको मार्जिन मिलना चाहिए, वो उसके खर्चे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट है। दूसरे दो खर्चे ऐसे हैं कि फार्मर की अपनी लेबर और फैमिली लेबर का मूल्यांकन करके हम इम्प्यूटेड कॉस्ट लगाते हैं। C2 में जो उसकी अपनी लैंड है, जिसका एक रेंट होता है, जो सब्सटेंशियल पार्ट है, वो उसमें होता है। ये खर्चे किसान को मिलने चाहिए, लेकिन इन खर्चों पे, क्योंकि उसने ये खर्चे किए ही नहीं है, इस पे मार्जिन का हमें औचित्य बता दीजिए। तो ये जो दोनों सवाल थे पूरे ग्रुप ने, वो उन्होंने, स्वामीनाथन साहब ने Okay. इसका कोई जवाब नहीं दिया। Let me put that question to Chaudhary Pushpender Singh, because there are some flaws with the Swaminathan formula. You're saying that he got the Bharat Ratna for his work on increasing crop production, not for his economics. And there are elements of the Swaminathan formula where farmers are being given margin on things like the land that they own or their farm labor, which should just be given at cost. Why should there be a margin on that? तो इसका जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी। नहीं, देखिए, कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, और रमेश चंद जी इकोनॉमिक्स के बड़े स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि कोई फ्रेशर जाकर के उस चीज को उगाएगा तो उसको जो जो इनपुट लगेगी, चाहे वो लैंड हो, कैपिटल हो, इक्विपमेंट हो, खाद हो, बीज हो, अपनी लेबर हो, बाहर की लेबर हो, सारी जोड़नी पड़ेगी। वो कॉस्ट पे सवाल नहीं उठा रहे, मार्जिन पे उठा रहे हैं। वो कॉस्ट तो दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं मार्जिन 50% क्यों है, 10%, 20%, 30%, 40% क्यों ना हो, कम क्यों ना हो मार्जिन? हाँ, अभी मार्जिन पे ही आ रहा हूं मैं। जो अब आप 100 रुपए अगर कॉस्ट आई, अगर उसके ऊपर 50% अबाव दे रहे हैं, तो वो 50% नहीं है। ये भी गणित का कोई स्टूडेंट बता देगा। वो 150 में 50 हो गया, 100 का 150 किया, 150 में 50 होता है 1/3, 33%। और वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क काम है। कभी कभी आपकी फसल चौपट हो सकती है और अन्य जो चीजें हो सकती है। देयर इज इंश्योरेंस। रिस्क को क्यों जोड़ रहे हैं? रिस्क के लिए तो इंश्योरेंस है ना सर। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, जो इन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन से पूछा, आपने क्यों किया। स्वामीनाथन आयोग को एग्जामिन करने के लिए उनकी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने खुद उस रिकमेंडेशन को माना और उन्होंने बार बार अपने भाषणों में उस एक बात को कहा, जो कि मैं आपके चैनल पे 17 सेकंड की क्लिपिंग सुना रहा हूं। अब बताइए, प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, वो यो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन के अनुसार देंगे, और उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट में उन्होंने माना। कोई हवा में ये भाषण नहीं दिया गया। 2011-12 की वो है commission की Okay, report. let Ramesh Chandra respond to this, that when report parties are in opposition wanting to be in power like the Congress is at this time, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge are saying hum MSP denge. When they were in power from 2006 to 2014 and they had the opportunity, they didn't do it at that time. Other chief ministers who were in opposition, who are now in government, were saying we will do it. जब सरकार में होते हैं, मौका होता है, तब करते नहीं है। विपक्ष में बैठते हैं तो किसानों का वोट चाहिए, कहते हैं मैं कर दूंगा MSP। जवाब दीजिए रमेश चंद जी। राहुल जी, सेंसिटिव चीजें हैं, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं MSP का। मेरे डिफरेंसेस फिर इस पे हैं कि MSP क्या होनी चाहिए। अब मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पे आता हूं। मिस्टर सिंह, मैं आपको ये बता दूं कि जब टिकैत साहब ने, शायद 2010 की बात है, बहुत बड़ा 11 की या 12 की बात है, बोट क्लब पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था इन डिमांड को लेकर। मांग नहीं मानी गई थी। 2 कमेटियां बनाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। एक मेथोडोलॉजी फॉर MSP क्या होनी चाहिए, दूसरा WTO में हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे एडजस्ट करें। मैं इसलिए इस चीज को जानता हूं, वो दोनों कमेटियां मैंने चेयर की थी। आप अभी भी गूगल करके रमेश चंद कमेटी रिपोर्ट और मेथोडोलॉजी फॉर MSP
फिर मेरे को वो रिपोर्ट देने में समय लगा। वो रिपोर्ट मैंने जब ये गवर्नमेंट आ गई तब दी। तो ये भाषण में कुछ कह देना अलग बात है, उसको अडॉप्ट करना एक अलग बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। इस गवर्नमेंट ने जरूर A2+FL पे 50% देकर उसको एक्सेप्ट किया है और लागू किया है। कितना मिलता है वो एक अलग है। तो ये मेरा जवाब है जो आपने ओके, नाउ शिवराज जी, हियर्स द फैक्ट, कई रेस्पॉन्ड दे दूं जल्दी से 10 सेकंड में दीजिए। देखिए, अब आप अर्थशास्त्री हैं, अगर आप एक नई कंपनी खोलते हैं और फैक्ट्री आपकी अपनी जमीन पे लगती है, तो क्या उस लैंड की कॉस्ट उसके अंदर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बिना जो है अपनी जमीन को वो कैपिटल के रूप में उसमें जोड़ेगा कि मैंने कैपिटल ये खर्च कर दी। हर चीज की कॉस्ट ली जाती है, इवन जो है तनख्वाहें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप कह रहे हैं कि ये मैंने जोड़ा ही नहीं, तो मैं तो पुष्पेंद्र जी, मेरे को नहीं लगता आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कॉस्ट पे सवाल नहीं, आप वो कॉस्ट पे सवाल नहीं खड़ा रहे बॉस, उस कॉस्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो जो कॉस्ट है उस पे कितना मार्जिन मिलना चाहिए उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। नहीं, आप समझे नहीं। A2+FL कम कॉस्ट है। जो कॉस्ट वास्तव में C2 1000 रुपए आएगी तो A2FL आएगी 800 रुपए, 1.5 गुना बनेगा उसका 1200 और उसका बनेगा 1500 रेट। ये वही कह रहे हैं कि हमें C2 नहीं चाहिए। C2 में जो भी इनपुट गई है, चाहे ओनर की गई है, चाहे कैपिटल की गई है, चाहे हायर की गई है, खरीदी गई है, वो सारी कॉस्ट जब इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कॉस्टिंग करता है वो लेता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए साहब? रमेश चंद जवाब दीजिए आप। तो वो सारा लैंड खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? सारी चीजें the allegation of differing standards, corporate costs calculated differently from agricultural cost। आप जिम्मेदार आदमी हैं, मेरी स्टेटमेंट द्वारा रिले करवा लीजिए टीवी चैनल वालों से। मैंने ये कहा है कि वो कॉस्ट जरूर पे होने चाहिए, लैंड रेंट हो चाहे फैमिली लेबर हो, वो जरूर प्राइस को उसे कवर करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि हमने सवाल माननीय स्वामीनाथन साहब से ये पूछा कि मार्जिन देने के लिए जो परचेज कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो कंसिडर होना चाहिए या C2 कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि C2 में वो कॉस्ट होते हैं जो फार्मर इंकर नहीं करता, तो उन पे मार्जिन देने का औचित्य नहीं। Okay, I think you made that point very clearly in the first time as well, but शिवराज जी, ये भी तो फैक्ट है ना कि जो एजिटेशन है वो जो अमीर किसान है एक तरीके से वो इसको कैप्चर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जैसे आप किसान नेता हैं, आपकी कितनी कुल जमीन होगी? मैं तो बहुत छोटा किसान नेता हूं, मात्र 1 हेक्टेयर का किसान हूं मैं। 1 हेक्टेयर की किसान की खेती है आपकी? हाँ, बिल्कुल, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मात्र 1 हेक्टेयर जो मेरे पूर्वजों ने छोड़ी वही मेरी जमीन है, जो मेरे माता पिता ने छोड़ी। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके, क्योंकि ये भी फैक्ट है जितने भी किसान नेता है यूनियन के, वो सारे तो इतनी बड़ी बड़ी जमीन लेके बैठे ना। मेरी जमीन आप जांच करा लेना, 1 हेक्टेयर का मात्र किसान हूं मैं आपको एक और बहुत बड़ी सर, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, एक सेकंड बताओ, एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के, सर जेवर एयरपोर्ट के बाजू में आपकी जमीन है और आप बोल रहे हो कि छोटी सी जमीन है आपकी। कितने एकड़ की जमीन है सच बताओ मुझे? पहले मैं बता रहा हूं, मेरी जांच करवा लेना। 1 हेक्टेयर का किसान हूं। आज हमारी लखनऊ में इको गार्डन में भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायती 10,000 किसान इकट्ठे हुए, विधानसभा को कूच भी करना पड़ा। और जिस गाड़ी में बैठा हूं मैं किसी दूसरे की गाड़ी में आया हूं, अपनी गाड़ी में नहीं आया। ये परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के बता रहा हूं। सारे किसान नेता एक जैसे नहीं है। आपकी गाड़ियां कितनी है सर? आपकी गाड़ियां कितनी है मुझे बताइए, खुद की गाड़ी आपकी कितनी है? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आपकी फैमिली में एक भी गाड़ी नहीं है? नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कैमरे पे कुछ कह रहे, कैमरे के बगैर कुछ और कह रहे हैं। जो सच्चाई है भाई जांच करा लेना ना इसकी। मैं इसमें कहा ऑन कैमरा बोल रहा हूं सर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो बड़े किसान नेता हैं जिनकी 100 150 एकड़ जमीन है, जिनकी जो आमदनी है वो हमारे रिपोर्टर से, हमारे एंकर से, हमारे प्रोड्यूसर से भी ज्यादा, उनको इनकम टैक्स क्यों ना लगे? कई लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो कहते हैं कि भाई इनको भी इनकम टैक्स लगना चाहिए अगर इनकी अच्छी खासी। जो छोटे किसान हैं उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको रियायत मिलनी चाहिए। जो बड़े किसान है वो क्यों ना पे करें टैक्स? वही मैं कह रहा हूं, 2 हेक्टेयर तक का किसान सबसे पहले तो गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए। और आज बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव घरानों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए हैं, और जो किसान के नाम पर सब्सिडी आ जाती है गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती, और बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव घरानों के जो फार्म हाउस है सारा वो ले जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं जिससे आप सुन ले कि MSP कब आई? सन 67 में।
क्यूआई के खेती को बढ़ावा देने के लिए। उससे पहले हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था। देश के अन्नदाता ने रात दिन मेहनत करके इस देश के पूरे देश को आज आत्मनिर्भर कर दिया। यहां तक कर दिया कि एक बार तो गेहूं समुद्र में बहाना पड़ा, ये गेहूं भी नहीं रखा पाए थे। देखो, हमारा देश जब दलहन यहाँ पैदा कराना चाहता है, बाहर से दलहन आयात करता है, बाहर से पाम ऑयल आयात करता है, बाहर से कच्ची खाड़ आयात करता है, बहुत मोटा पैसा आयात में खर्च करता है। उसको किसान पे खर्च करे, और जो किसान पैदा करे उसको निर्यात में खर्च करे। और सरकार भी खरीद कर सकती है एमएसपी की, इतना ही नहीं कि सरकार, जिसको हमारे प्राइवेट सेक्टर में दलाल खरीदते हैं और मिलों को जो ऊंचे रेट पर बेचते हैं, सरकार भी बेच सकती है मिलों को जाकर के। दूध हमारा 40 रुपया लीटर घर से जा रहा है डेयरी पर, और दूध, पानी की बोतल भी 40 रुपया लीटर है। आटे से बना हुआ बिस्कुट 50 पैसा महंगा नहीं मिल सकता, जो मैक्सिमम प्राइस है उसी पे बिकेगा। हमारे चने का जो बेसन है उससे नमकीन बनता है, उसी रेट पे बिकेगा जो उस पर रेट पड़ा हुआ है। जो हमारा दाल से दलहन वो दाल भूजी बनती है, वो अपने उसी रेट पे बनेगी। आलू सस्ता हो जाए, उससे जो चिप्स बनती है वो अपने रेट पे बनेगी, आलू कितना ही सस्ता हो जाए। अरे भाई, किसान आज घाटे की खेती कर रहा है, युवा खेती से पलायन कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खेती बेचता चला जा रहा है, और कॉर्पोरेटिव घराने उसमें बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते चले जा रहे हैं। क्यों सरकार इतना कॉर्पोरेटिव घरानों के दबाव में, क्यों इस देश के अन्नदाता की तरफ क्यों? Raghav Awasthi, you're listening to this debate. This is politically explosive. At this moment, the farm protest largely restricted to Punjab, but like Shivraj Singh, others in UP elsewhere trying to stage a protest as well. And they're asking questions about why, when your leaders were in opposition, they were making promises which they aren't willing to keep while in power. So, Rahul, there are two things here. First of all, I would like to congratulate everybody for the tone in which this debate is being conducted. I think that's very good. The other thing is this, like, leave aside the political aspect of it. One thing which I don't understand is the philosophical basis of this demand, that for every crop that is being grown, there should be MSP that is given, and the MSP should be cost price plus 50%. By this yardstick, there are many lawyers in India also who don't have any money, and they still provide really precious legal services to the public. They also have inputs. So we can't subsidize everything to an extent where there is a fiscal imbalance. And this is something that every government has to be mindful of. Because if there is fiscal imbalance, ultimately the problem will arise because there will be inflation. So as far as my limited knowledge of economics is concerned, and maybe Professor Ramesh Chandji can enlighten me more on this, ultimately if there is inflation, it will hurt the farmer, it will hurt the lawyer, and it will also hurt the journalist. Because the government of India does not have unlimited funds. There are other aspects of the welfare state that also have to be run. So irrespective of the political overtones of this debate, all of us as responsible citizens should also be mindful of this. Now questions also being asked about the role of the Aam Aadmi Party Chief Minister Bhagwant Mann. Bikramjit Singh Passi joins us, spokesperson of AAP. Now many of these demands were actually promises made by the AAP in its manifesto during the Punjab elections. The likes of Sunil Jhakar, who's now in the BJP, have spoken out saying that Bhagwant Mann played a very clever double game, joined the protest because he wanted to ensure that the protesters won't be in Chandigarh, that they'd march towards Delhi. That many of these promises are promises which you made to the voters of Punjab. You should be fulfilling them rather than throwing the tennis ball to, or the keno, whatever you want to call it. You can throw the keno in the court of the government. Bikramjit Singh Passi. Mr. Sunil Jhakar is actually making lies. You know that a few days ago he spoke loud about the junkies. What was he saying? That there were the photos of Mr. Kejriwal, Mr. Bhagwant Mann on all the junkies which were नहीं, पर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने का वादा तो आपका था ना इलेक्शन में. आपने थोड़ी बोला था कि केंद्र सरकार से दिलवाओगे. आपने बोला था मैं दूंगा, मुझे वोट दो. अब आपको वोट मिल गया तो आप दो. The farmers who are agitating have clearly stated all their demands are concerned with central government only. All the 12 demands which they are raising, one regarding MSP, second regarding amendment in the electricity bill, third regarding the Lakhimpur case. You know that what happened in Lakhimpur? Even if Supreme Court had not interfered, then there was no chance of any arrest. Even the bail was granted in such a serious case very early, and then Supreme Court intervened.
That's what happened. All the demands of the farmers are concerned with central government only. And this has been cleared by. And we are ready to talk. One thing more. We have arranged 4 meetings of the central minister with farmer leaders. All the former leaders and central minister attended the 4 meetings, and our Bhagwant Mann ji, Chief Minister of Punjab, attended all the 4 meetings, and we called the concerned ministers also. We were repeatedly saying to the central government that you should have big heart. You must listen to the farmers. Now today, recently Mr. Arjun Munda is saying that yeah, they are ready to talk. But what happened the day before yesterday? Only 3 crops. They were targeting only 3 crops, that we are going to give you MSP on 3 crops, that is cotton, that is pulses, etc. But the farmers were demanding MSP on 23 crops. One thing. Second thing, there is a strategy of the BJP regarding the cooperative houses to waive off their debts, to NPA their debts. 14 lakh. आप ही के चैनल पे चल रहा था, in your channel. 14,56,226,000 crores. What was that? You must have some sympathetic view towards the farmers. Okay, Prakash Chandra Sharma, who's being unreasonable here? You're with the Kisan Morcha. Who's being unreasonable, the farmers or the government, and how do you see a breakthrough in this? Rahul, it's not about who is unreasonable, who is not. One thing is very clear about the debate, about the matter. Farmers are in center, that's number one. But again, the farmer issue is a very large, comprehensive issue. But here, the so-called Kisan Neta who are sitting, putting the article on this, the English newspaper, and everything is there. But they are basically, it's a transit phase from the past to future via the present. So they just want to be in the past. They are talking about the corporate houses. They are talking about all the issues. Why didn't they talk what the government has did in last 10 years to create the infrastructure for that? And whether we do have an infrastructure or not. Even the infrastructure is not there, how to make it strengthen more about it. Number 2, what the subsidies in the fertilizers and all, the crores of rupees the government every year is spending on the subsidies on the fertilizer only to provide the things. The issue is they are just looking as per the set. Like I'm just giving an example, you are from the media. So if you will talk about 20 years, what was the condition of media? What is the condition of media before 10 years and now what is the condition? So year on year, we should evaluate the things. Apart from that, one thing is very clear. Let Pushpender Singh respond to this. Reality. Yes. So they don't want to understand the reality. They want to be the perceptive. They want to be the emotional. They don't want to understand Pushpender ji, you're playing the emotion card. Indian agriculture needs to change. You can't keep harking back to the past. You need to look into the future. अगर हम केवल पैडी और वीट उगाते रहेंगे तो पंजाब की तबाही हो रही है, होती रहेगी, वाटर टेबल और गिरता रहेगा, लोगों को फार्मिंग छोड़नी ही पड़ेगी. The current structure is unsustainable and therefore what is being suggested to the farmers, crop diversification, switching cropping patterns, not growing something like paddy in the summer seasons, that is what Indian agriculture desperately needs. Farmers need to break out of this logjam, march into the future. No, Rahul, one more thing is there. I just want to add on. Pushpender ji. अरे एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुको भाई, इनका थोड़ा डाउन करिए तभी तो मैं बोलूंगा. देखिए ऐसा है कि मैंने कह दिया कि आपके दरवाजे पे 23 बसें खड़ी हैं. अगर 3 चलती हैं तो आप मजबूरी में उनमें बैठोगे. अगर सारी चलेंगी तो आप सब में किसी में बैठ सकते हो जो आपको नहीं. बाकियों को ही तो चलाने की कोशिश कर रही है सरकार बॉस, इसीलिए तो एमएसपी दे रही है बाकियों पे. आप बाकी 5 पे क्यों नहीं एमएसपी लेने को तैयार हो? जो नहीं, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए सर. एक सेकंड सर, तूर, उड़द, मसूर, मेज और कॉटन में सरकार 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है एमएसपी का. बाकी बस को आप नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए. मैं कह रहा हूं कि बाकी बसों को ही तो सरकार चलाने की कोशिश कर रही है आपको 5 साल का लॉक इन एमएसपी देके. हम नहीं चल रही ना वो 5 साल का लॉक इन 5 साल तक चलेगी नहीं चलेगी. आप सबको चला दो ना, आपको खर्चा भी नहीं करना उसमें. और दूसरा सब्सिडी वाली बात मेरे भाई ने उठाई. सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए. One second. You need to explain better to our viewers at this moment what your problem with the current formula is. Through the NAFED, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, or the National Cooperative Consumers Federation, the NCCF, the government is offering a 5-year contract for through MSP for these 5 crops. What's the problem with that? जो यही तो बसों को चलाने की कोशिश कर रही है. ठीक है तो फिर लीजिए उसको.
देखिए, नहीं, मैं पूरी बात तो सुनो ना मेरी। देखिए, ऐसा वो भी सारे जो है राज्यों में अप्लाई होगी या नहीं होगी, उसको ये कर सकते हैं तो ठीक है, कुछ एडिशन हो जाएगा, लेकिन एश्योरेंस तो नहीं है ना। एक बेसिक एश्योरेंस तो हमें चाहिए। अश्योरेंस ही तो दिया कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और क्या एश्योरेंस होता है? सर 5 साल का नहीं है, 23 फसलों के बारे में बात है, सहमति इसमें बन चुकी है। और दूसरी बात जो सब्सिडी की उठाई जा रही है बार बार पूरे देश में, आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, जो भी इनपुट सब्सिडी फर्टिलाइजर की वो सब मिलती है, वो किसानों की सब्सिडी नहीं है। दीज आर बेसिकली कंज्यूमर सब्सिडी इन दी गार्ब ऑफ फार्मर सब्सिडी। रमेश चंद जी को पता है इस बात का और तस्दीक कर देंगे। अगर मुझे सस्ता खाद देते हो तो मेरा प्राइस भी आप उतना ही कम कर देते हो कंज्यूमर लेवल पे। इसलिए जो भी मुझे सब्सिडी जो है इनपुट सब्सिडीज मिलती है, पावर सब्सिडी मिलती है, या वो मेरी अपनी सब्सिडी नहीं है, मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता हूँ। 6,000 रुपए पीएम किसान के यदि मुझे मिल रहे हैं तो वो सब्सिडी मैं मान सकता हूँ, इनकम सपोर्ट है। लेकिन बाकी जो सस्ता खाद अगर आप देते हो तो उसी हिसाब से आप काट लेते हो जब मेरी एमएसपी कैलकुलेट करते हो। रमेश चंद जी इस बात को बता देंगे। इनपुट सब्सिडीज आर नेवर जो है फार्मर सब्सिडी, दे आर कंज्यूमर सब्सिडीज इन द गार्ब ऑफ farmer subsidy. But that's a bizarre way of looking at things. If you are paying, sir, if you are paying full market price for fertilizer or for electricity or for water, your input costs would be much higher. And the MSP will also be much higher then. Sir, but you get protection. We don't import freely from Australia or from Canada. Sir, we don't have free imports from other countries. ये रमेश चंद जी बता देंगे इस बात को। आप नहीं, फिर आप अलाउ कर दीजिए ना फ्री इंपोर्ट। लेट इंडियन फार्मर्स compete with farmers internationally. मत लीजिए आप ये सब्सिडी। We can do that. We are already competing. You stop all these exports. अभी गेहूं हमारा बाहर महंगा बिक सकता है, यूक्रेन युद्ध के टाइम पे महंगा और बिक सकता था, आप लोग खरीदते 100 रुपए का। इनपुट सब्सिडीज कभी भी। Let Ramesh Chand respond to this, because this is something farmers feel very strongly about, that when farmers get an opportunity to make money, when they can export at higher prices, government stops those exports so that prices in the country, whether it's for onion or for tomatoes or anything frankly, don't spiral. That you're constantly protecting the customer, taking away from the farmer the opportunity to make money. However, the risk is entirely his. So he has to bear the entire risk. He doesn't get to benefit from the returns that can come to him in the case there is any favorable circumstance that opens up internationally. Okay, Rahul, I am responding only to your question, though Mr. Singh raised very valid point also. You see, this issue is often raised that whenever prices go high, government stop export. Let me tell you, this statistics is slightly old. More than 70% of farmers, they are net consumer of food. They spend more on food than what they earn from sale of food commodity in the market. So, first of all, to say that this thing is being done only for sake of consumer, we should remember it. 70% of farmers are net consumers. A beet and paddy producer buy pulses from the market, oil from the market, vegetable, fruit, etc., etc. Now, coming to why and on what basis these kind of decisions are taken, when to curb export, when to do what. No, but respond to the other point, that if you're giving MSP on 5, why can't it be on all 23? That's the question that's being asked. 5 pe de rahe ho, sab pe do. This is also important. Let me respond. You see, these are complex issues. You should give time to explain. India doesn't follow policy of free trade. We have been following policy of strategic liberalization. The meaning of this is, when international prices are very low, we protect interest of consumers, producers. Even now, there is 40% duty on import of wheat. The imported wheat in many situations can be much cheaper. That's the point I was making, yes. Within the country. When the opposite happens, we protect interest of consumers, and both are Indian consumers. They are not enemy of each other. So through this process, government balances interest of producer and consumers. When government, so you're protected both ways. You're protected also because there is no free import. Pushpender, you can't look at one part of the equation and not at the other. If you reduce the import duties, then prices would fall, and Indian consumers, Indian producers of food grains would not be able to compete with Canada and Australia, where agriculture happens on a far more mechanized, far bigger scale. Small land holdings can't compete with that.
Coming to Rahul 23 ji, commodity, again I think I would like to refer to one study of OECD and ICR done in 2018. Because of these restrictive trade and practices of the government, the Indian farmer has lost about 45 lakh crore rupees. Yeah, what the farmer is owed. This article you can refer. You must read this article. It was published on 21 January 2019. जो भी हम किसानों को देते हैं, जो उससे लेते हैं, नेट प्रभाव जो उसका ये है, वो नेगेटिव सब्सिडीज में जा रहा है. नेगेटिव 14% के आसपास हम किसानों से लूट ले रहे हैं. सर आपकी लैंड होल्डिंग कितनी है पुष्पेंद्र जी? आपकी लैंड होल्डिंग कितनी है? मैं 10 बीघे है जी मेरे पास. नहीं, because the problem is a lot of these agitations are led by the big farmers who have a very sweet deal for themselves, and they put themselves in the same basket as the small farmers, and that is also warped. It's not the small farmers who are leading these agitations, it's the big farmers who are leading these agitations. नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, ऐसा ये तो ठीक बात है कि जो मजबूत होगा, जिसके पास गाड़ी घोड़े का इंतजाम होगा, जो है समय दे सकता है, वही तो लीड करेगा. कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कमजोर जो जिनके No, but your problems are not the same as those of the genuinely marginalized farmer. सर, अच्छा, इसमें देखिए राहुल जी, वास्तव में ये लड़ाई जो आप ये बता रहे हैं कि भाई पंजाब हरियाणा के किसानों को तो एमएसपी मिल रही है, उनको ठीक एमएसपी नहीं मिल रही है, ये फायदा होगा. पहली बात, C2 प्लस 50%. और ये बिहार के किसान की जो धान है, आपको मालूम होगा कि 2200 रुपए के आसपास धान का रेट है एमएसपी, और 1000 रुपए 1200 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है. अगर एमएसपी लीगल गारंटी सारे देश में होगी तो वहां पर भी 2200 रुपए का रेट मिलेगा. उनके लिए ये लड़ाई वास्तव में. तो ये कह देना कि ये केवल पंजाब सर वो तो नहीं लड़ रहे, लड़ तो आप रहे हो, हैं? लड़ तो आप रहे हो. अगर उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो वो भी आ जाते सड़कों पे. वो तो शांत बैठे, वो तो बिहार में भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे. पूरा देश तो आजादी की लड़ाई भी नहीं लड़ा. अंग्रेज अगर आपका आर्गुमेंट मान लेते तो कहते हैं ये पंजाब हरियाणा के रोज गोली खाने आ जाते हैं, भगत सिंह और ये सब राजगुरु और सहदेव. ये सारा देश तो लड़ नहीं रहा. 33 करोड़ आदमी नहीं लड़ा. नहीं सर, आजादी की लड़ाई में तो सब लड़े थे. गुजरात से लेके बंगाल तक आजादी की लड़ाई में तो सब लड़े थे. ऐसा नहीं था कि केवल हरियाणा पंजाब वाले लड़े. संख्या कम थी. अगर आप कैमरा लेके जाएं, कोई बिहार का किसान कह दे कि भाई 1000 रुपए की जगह तुझे 2200 रुपए मिलेगी एश्योर्ड प्राइस धान की, तैयार हो? वो कह देगा बिल्कुल, कहेगा बिल्कुल तैयार हूं. और हमारे पास फोन आते हैं सपोर्ट के, लेकिन उनको पैसा नहीं है, किराया तक नहीं है. Ramesh Chand, you buy this? I'm also out of time, so final words that they are echoing the sentiment and the feeling of farmers in Bihar, Assam, Bengal, UP as well. Those people are not there because उनके पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, इनके पास है, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं. But they have the moral support of all farmers. Do you buy that argument, Ramesh Chand? I think there is more important issue raised by Mr. Singh, and let me respond to that. Okay. That is about 23 crops. Yes. And Bihar farmer not getting MSP for paddy and wheat. Very genuine question. Let me respond to it. For 50 years, farmer of this country accepted that MSP remain only for rice and wheat and cotton, and only in 4-5 states. In the last 6 years, please check the data. Wheat and rice are procured from as many states as 13 major states. Couple of other states, they don't have surplus, so there is no procurement there. Procurement, there is a system of decentralized procurement, there is a system of centralized procurement. Wherever state machinery wants, the adequate support is given by central government to buy rice and wheat. So if in Bihar they are not able to procure, I would say that the fault lies with the Bihar government. It is not that center has not created same condition for them or not. Coming to other crops, when this new formula is adopted, government gave 2 schemes to states. One is PM Asha, another is deficiency price payment. In a country, we have some crops which are of national importance. There are some crops which people don't even know name. But safflower may not be known to farmer in Haryana. So central government gave this option to states. Please procure these crops. We will meet the expenditure that you will incur on these, and things are happening. You look at the amount of pulses procured by Rajasthan government during previous Congress regime. They took advantage of PM Asha, and this deficiency price payment option is also given by the government to the state. And in last 5-6 years,
Many people may not be knowing Okay. we have created buffer stock of 3 million of tons, so it is expanding Last across So, the एक state. लाइन so बोलना I'm चाह रहा out हूँ, of time on this debate. एक लाइन I बोलना चाह रहा हूँ सर, बोलो जी, एक लाइन ही बोलो, ये टाइम नहीं है सर बस. हमारी मांग सरकार सारा खरीदे, राज्य सरकार केंद्र सरकार ये है ही नहीं, 50 बार कह चुके। आप कैप लगाइए, फ्लोर प्राइस दीजिए, प्राइवेट वाला जो खरीद रहा है वो जो लूट कर रहा है वो करेगा। आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जो खरीद रहा है वो खरीदिए, हम ये आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे। Okay, this is where we wrap up this Newstrack debate. We were able to hear both points of view. I'm not sure we arrived at a conclusion or a consensus, which is also demonstrative of the challenge the government is facing in these negotiations with the farmers, which is why there's been no breakthrough just yet. But at least we have a better sense of the thinking on both sides. Shorn of politics, just as far as the economic argument is concerned, the thinking on both sides, the government and the farm unions. Pure Wash Electronic Seat by Kohler. Wish everything was this intelligent. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code. Sveda by Kohler. Wish everything cared for your skin. Colors by Kohler. Makes you wish everything was as vibrant. Pure Wash Electronic Seat by Kohler. Wish everything was this intelligent. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code. Sveda by Kohler. Wish everything cared for your skin. Get ready. Colors by Kohler. Makes you wish everything was as vibrant. Colors by Kohler. Makes you wish everything was as vibrant. Colors by Kohler. Makes you wish everything was as vibrant.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है रीजनेबल डिमांड उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। Weather forecast now. Delhi, maximum 28 and minimum 13 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 24 degrees. Kolkata, maximum 36 and minimum 21 degrees. Bangalore, maximum 32 and minimum 23 degrees. Chennai, maximum 31 and minimum 23 degrees. Hyderabad, maximum 34 and minimum 21 degrees. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Viewers, let's take a look at the weather report across the major cities this evening. Thiruvananthapuram is at 32 degrees Celsius with an AQI of 127. Mumbai is at 29 degrees Celsius with an AQI of 87. Panji is at 29 degrees Celsius with an AQI of 63. Ahmedabad is at 28 degrees Celsius with an AQI of 66. Bhopal is at 30 degrees Celsius with an AQI of 58. Jaipur is at 26 degrees Celsius with an AQI of 138. Delhi is at 25 degrees Celsius with an AQI of 208. Srinagar is at 5 degrees Celsius with AQI being 50. Lucknow is at 25 degrees Celsius with an AQI of 111. Patna is at 26 degrees Celsius with an AQI of 115. Kolkata is at 28 degrees Celsius with an AQI of 155. Hyderabad is at 32 degrees Celsius with an AQI of 110. Bangalore is at 32 degrees Celsius with an AQI of 126. Chennai is at 30 degrees Celsius with an AQI of 120. This is all we have for you in this segment. Hope wherever you are, you find favorable weather around you. Keep watching India Today for all the weather updates with me AI Sana all through the day. Presented by JK Tyre Ranger Series. Stay wild at heart. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-powered by The Bold Look of Kohler. Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your primetime destination Wednesday night. The big story is the breakdown of trust between the government and Punjab farmers.
Why are the farmer unions, many of them Sikh groups, angry with the centre? The growing divide between the Sikh farmers and the centre. Also tonight, we'll remember a very special person. The one and only Fali Nariman, India's most eminent jurist, has passed away. We'll also have a special tribute to Amin Sayani, the voice of India on radio. All that and more in a moment, but first, as always, it's time for the 9 headlines at 9. Big showdown between farmers and police at Delhi borders. Farmers pause their Delhi Chalo march for 2 days. Government urges for fresh talks with Kisan. This even as the death of a farmer has sparked off a fierce fight between Haryana and Punjab governments. Samajwadi Party and the Congress ink a seat-sharing pact in Uttar Pradesh for the general elections. Congress to contest on 17 seats. Samajwadi Party will fight on 63 seats in UP. A seats-sharing deadlock between Aam Aadmi Party and Congress in Delhi. AAP convener Arvind Kejriwal admits to an alliance delay. Sources say Congress pushing for 4 seats in Delhi has delayed the talks. An announcement likely by the weekend. The Trinamool versus BJP row in Sandesh Kali escalates. BJP asks Mamata Banerjee to furnish proof of Khalistani abuse hurled at police. Mamata claims BJP conspiracy to tarnish Bengal's image. Congress levels another big charge, claims another 65 crore rupees taken by the Income Tax Department. Treasurer Ajay Makan says banks have been mandated to transfer the amount to the government. Delhi liquor gate heat now on former Telangana Chief Minister KCR's daughter once again. CBI issues fresh summons to K. Kavita on February 26th. Language war resurfaces in Karnataka. Siddharamaiah government minister says multinational companies will be asked to display boards of Kannada employees. BJP welcomes the move. And ISRO achieves another milestone, successfully tests its cryogenic engine for the unmanned Gaganyaan mission, which will be the first to take Indian astronauts to space. Eminent jurist Fali Nariman is no more. The senior Supreme Court advocate passes away at the age of 95. Condolences pour in for India's sentinel of the judiciary. But the latest breaking story that we are getting is that the battle now between the centre and Punjab farmers has taken a new twist, because the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has not only backed the farmers, he has said that action will be taken against officials of the Haryana government who are being blamed for the death of a Kisan. That's right, a Punjab farmer died in the agitation today, and the blame is now being heaped on the Haryana government and the Haryana police in particular, which is alleged to have resorted to tear gas shells during those protests. The Chief Minister of Punjab has said, why is Haryana blocking the farmers? Why are the farmers not being given space in Delhi to protest? While the farmers have paused their Delhi march now for 2 days, clearly a new twist added with the Haryana government or the Haryana police being blamed now for the death of a Punjab farmer. Listen in first to Bhagwant Mann. पर्चा भी होगा पोस्टमार्टम तो बाद पर्चा करके जांच करांगे ते ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
I want to go straight across to my correspondent in Chandigarh. Our correspondent in Chandigarh there is Kamaljit Sandhu, tracking every move. Kamaljit, it seems now open war between these two states. The Chief Minister of Punjab saying he will act against Haryana government officials whom he is blaming for the death of a farmer. Can you give us more details about exactly what is the explanation for the death of this farmer? You know, the farmers were gathered at Shambhu border and in Kanwal, and this is where there was a lot of protests happening there in Kanwal border, where it seems that there were some gunshots fired, and we've been told that some rubber bullets were used. So let me tell you that once this entire thing happened, at least 13 farmers were injured. Some of them were rushed towards Patiala. Shubkaran was brought dead to the hospital, all of 21 years of age, from Maud in Bhatinda. And obviously, there has been a lot of controversy regarding this. All the opposition leaders, including Pratap Singh Bajo, who is saying that Anil Vij should be booked, especially because the Home Ministry is responsible, and that is the Haryana's Home Ministry, and saying they've crossed the line, entered the territory of Punjab and shot at the farmers. Today in the evening, however, we heard Bhagwant Mann speak, and obviously he did not miss any words. He said we would not been stopping the farmers. They wanted to go ahead to Delhi, but this is where there has been an excess use of force. What he said is, after the post-mortem is done, and remember that is when it will be known as to what was the main cause of his death, that is when there would be action taken. And obviously there has been a question mark even coming as far as Punjab police is concerned, because many said they did little to stop or resist the farmers from going ahead with their march towards Delhi. Meanwhile, it seems there has been a certain escalation. As soon as the news of the death spread, the senior farmer leaders marched towards the Shambhu border, and that is where more tear gassing was done. So for now, at this point of time, for 2 days, the SKM seems to have called this off. Tomorrow, there's a big meeting in Chandigarh where they will decide the next future course of action. But clearly, tensions rising as there's one casualty now. And obviously, Punjab Chief Minister saying they will look into all the circumstances and act on the officials who are behind this killing. Right. Just to tell our viewers, remember, you have a Aam Aadmi Party government in Punjab, you have a BJP government in Haryana, and that adds another dimension to this conflict. Kamaljit Sandhu, appreciate you joining us. Just to also put in context, the farmers, many of them Sikh-led unions, farmer unions, were today back on the street with 1,200 tractors on the Shambhu border, which is on the Punjab-Haryana border, planning to move towards Delhi. And while they may have put a pause to their Delhi Chalo Andolan for now, the scenes that took place this morning will clearly haunt them. The police, Haryana police, firing tear gas shells at them to impede their advance beyond the Haryana border. Clearly, this is a situation that is now tense and could escalate once again. What exactly transpired, and why are the farm unions determined with their 1,200 tractors to take to the streets and come towards Delhi? It's our top story. After 2 days of pause, on Wednesday, the Delhi Chalo march resumed. Preparations are under its way to save themselves from tear gas. They are keeping these jute bags wet. Whenever a tear gas shell will be actually fired, these bags will be used by the farmers to move forward. Also, these sandbags you can see that were filled by the farmers yesterday have now been kept on the ground. Clearly, the arrangements have been made by the farmers, but this time the Haryana police is also not keeping any stone unturned to stop them from moving ahead. Farmers were seen ready with armored gear and gas masks and even steel shields to combat any tear gas firing. JCB machines have been put. They say that as far as the machinery has been put here, the poclanes, and these are the ones which is going to move forward. That means tension ahead of this entire movement
we've heard about Jai Jawan, Jai Kisan, and it seems that the Jawan is versus the Kisan. It's going to be a big showdown here. हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद है वहां पर बड़ी संख्या में। अनिल जायसवाल आगे की तरफ और ये देखिए कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है और जिस तरह से किसानों ने पोकलैंड मशीन मंगाई है। सामने की तरफ देखिए हरियाणा पुलिस ने भी वो पोकलैंड मशीन मंगवाई हुई है वहां पर। तो सीधे सीधे जिस तरह की तैयारी किसानों की है उसी तरह की हरियाणा पुलिस की है। Tear gas shells were sporadically fired to impede their advance. In a bid to ease tensions, the government extended an offer of a fifth round of talks, emphasizing the need for peaceful resolution. हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावनाएं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। Previous discussions between the government and the protesters ended in an impasse, with farmers standing firm on their demand for minimum support price assurance on all crops. With Arvind Ojha, Shreya Chatterjee and Kamaljeet Sandhu at Shambhu border. Bureau Report, India Today. So let's raise the big questions tonight. Is there now a total breakdown in trust at the end between the Modi government and the farmers of Punjab? Why are the farmer protests being limited to Punjab? Is Punjab the one state where the Modi factor is just not working? Are Sikh groups in particular angry with the centre? Not just farmer groups, but Sikhs in general. Those are some of the questions I will raise. I'm joined by Shashi Kant, former DGP Punjab. VM Singh is President MSP Guarantee Kisan Morcha. Birpal Singh is a farmer leader who has a different view. And I'm joined by Harmeet Shah Singh, our senior editor. Appreciate you joining us, all of you joining us. I want to come to you, VM Singh, first, because you are someone at the heart of this demand which the farmers are making for an MSP legal guarantee. Now, many are questioning the timing of it. You're doing it just weeks before the Lok Sabha polls begin. Is this because you believe the government is vulnerable at this moment? And there are those who are saying that there is therefore a political agenda here to create a sense that the government is encircled the Modi government before the elections. Explain your response to that. Radhi, firstly, I'd like to tell you how it came about. MSP is not something that started today. In the year 2000, 23 years ago, we had an agitation bigger than what we're having today. In Uttar Pradesh, one chief minister had to go and Rajnath Singh came in. That's where we started. That is why in 2004, there was this National Commission for Farmers with Swaminathan as the chairman, which came in for the same reason. And in 2007, when the report came in, 3-4 volumes came in, 4 volumes plus came in, then Mr. Modi, as the chairperson of the working group comprising of 4 chief ministers of the